Hi everyone, welcome to today's video. So in this session, we are actually going to discuss about the types of cloud computing. So let's begin. So if I talk about the types of cloud computing, so generally we have two types or I would say two categories. दो categories में cloud काम करता है. So the first category here is based on the service delivery model, and the second one would be deployment model. So you can say that these two are the categories or the types. Now, if I talk about the first type, which is service delivery model, so under the service delivery model, we have further three categories: IaaS, PaaS, and SaaS. So we pronounce this as IaaS, PaaS, and SaaS. IaaS, PaaS और SaaS pronounce करेंगे इसको. And the IaaS stands for infrastructure as a service, PaaS stands for platform as a service, and the SaaS stands for software as a service. Now, if I talk about the second category, so based on the deployment model, we have further three types of cloud: public, private, and hybrid. So these three are the main types of cloud that we have. Apart from this, there is one more model which is called community cloud. So एक community cloud करके भी होता है that I will discuss later on. But in the industries, these three types of clouds are in use. So public, private, and hybrid. Now, what is the meaning of service delivery model and what is the deployment model? So let's discuss this. So service delivery model basically means that what kind of services the cloud service providers are going to offer us based upon our requirement. मतलब हमारी requirement क्या है cloud के related? Let's say I am a company xyz.com. So what is my requirement? Why? What kind of IT infrastructure I want to use? किस टाइप का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे यूज करना है. सो बेसिस ऑन दैट आई विल contact to the cloud service provider. For example, I will contact to the AWS or I will contact to the Azure, and I will state my requirement that this is my requirement. I want to have these kind of infrastructure where I will be managing this part and you have to manage this part. मतलब कुछ पार्ट मैं मैनेज करूंगा, कुछ पार्ट आप करोगे, इस पे मेरा कंट्रोल होगा, इस पार्ट पे आपका कंट्रोल होगा. सो बेस्ड ऑन दैट द सर्विस डिलीवरी मॉडल वर्क्स. सो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या रिक्वायरमेंट है, आई विल प्रेजेंट दैट रिक्वायरमेंट टू द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर. जिससे भी मुझे क्लाउड सर्विस लेनी है मैं उसको प्रेजेंट करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे सर्विस देगा. दैट इज अ सर्विस डिलीवरी मॉडल and accordingly they will charge from us. Second is deployment model. So deployment model basically means how the cloud facilities are deployed. क्लाउड फैसिलिटीज किस टाइप से डिप्लॉयड है, किस टाइप से कॉन्फ़िगर्ड है, दैट इज द डिप्लॉयमेंट मॉडल. मतलब हमारे लिए इन ऑर्डर टू यूज द सर्विसेज फॉर अस, हाउ द मॉडल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ द सेटअप इज देयर. मुझे अगर क्लाउड यूज करना है मेरी कंपनी में बेस्ड अपॉन माय रिक्वायरमेंट, सो हाउ द सेटअप विल बी लुक लाइक, किस टाइप से कंट्रोल होगा, किस टाइप से you can say the accountability will be there. So that is the deployment model. So let's discuss both of these categories one by one. So I will first discuss about the service delivery model. So service delivery model के accordingly cloud तीन types का होता है: IaaS, PaaS and SaaS. So you can call it infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So IaaS, PaaS and SaaS pronounce करते हैं इसको industry में. Now, what is this model all about? So generally, as I mentioned earlier, जो हमारा ऑन प्रेमाइसिस होता है, जो हमारा फिजिकल ऑन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वॉट एवर आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओवर देयर, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इट. चाहे वहाँ पे नेटवर्किंग हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे सर्वर्स हो, चाहे ऊपर से कुछ भी एप्लीकेशन रन कर रही हो, एनी डेटा, एनी स्टोरेज. सो एवरीथिंग इज मैनेज बाय द कंपनी इफ इट इज ऑन प्रेमाइसिस, इफ इट इज लोकेटेड इन द ऑन साइट. सो सब कुछ कंपनी को ही मैनेज करना है. दे हैव टू हायर द इंजीनियर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट टास्क. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैचिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी अपग्रेड्स, एवरीथिंग. सो हर सेक्शन में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज देयर अकाउंटेबिलिटी टू मैनेज एवरीथिंग इफ इट इज ऑन प्रेमाइसिस. नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू मूव टू द क्लाउड. मान लो मेरी कंपनी ने डिसाइड किया दैट आई विल मूव टू द क्लाउड. सो एनी क्लाउड दैट यू पिक, इट इज द अगेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. कंपनी कोई भी क्लाउड पे जा सकती है. ऐसा नहीं है कि दे विल ओनली गो फॉर AWS और Azure. They have diverse requirements. They can go with any other cloud.
Right now in the market, AWS and Azure are giant cloud service providers, but companies को लगता है if they have the requirement, they can go with Google Cloud, they can go with Oracle Cloud. So it depends. So whatever cloud they are choosing, now if they want to move from on-premises to the cloud, so as per the service delivery model, how the things will look like. So मान लो company ने decide किया, let's suppose the company has decided that I will take the cloud service. For example, I will take it from Microsoft. So I will take it Azure Cloud. मान लो मैं Azure Cloud लूंगा or I will take it AWS. So what they have decided that we will just take the infrastructure part from the cloud service provider Azure. उन्होंने decide किया कि हम सिर्फ Azure से infrastructure part लेंगे. Infrastructure in the sense, if we have the requirement of the servers, so we will not purchase our own servers. We will take it from the Microsoft Azure. हम उनसे जाके लेंगे एंड उसमें जो भी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, बैकएंड में जो भी नेटवर्किंग कनेक्टिविटीज करनी होगी, वी विल नॉट डू दैट. सो वी जस्ट नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब अगर मुझे एक सर्वर चाहिए, सो एक सर्वर मैंने ले लिया, उस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए देयर इज अ नेटवर्किंग इन द बैकएंड. वो नेटवर्किंग भी मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लूंगा. In order to store the data, I need the storage also. So storage भी मैं cloud service provider से लूंगा. Maintenance का जो भी task होगा, I will not do as a company. The cloud service provider will do that. So in our case, Azure will be responsible for it. इसमें कोई भी upgradation, कोई भी hot fixes, कोई भी bug fixes, कुछ भी करना है backend में related to the infrastructure, I will not do anything. So that is infrastructure as a service. So in the infrastructure as a service, you take the infrastructure from the cloud services provider and you pay them the charges as per the pay as you go model. So आपको जो भी infrastructure चाहिए, I have given you the example of servers. So networking will be provided by the cloud services provider. मतलब networking वो करेंगे उन servers की backend में. Storage they will provide you. Servers they will provide you, plus virtualization infrastructure they will provide you, and they will be responsible for the maintenance of all these stuffs. ये सारी चीजों का maintenance, इनके upgradations, इनके compliances, that is the responsibility of cloud service provider here. So अगर हम Azure से ले रहे हैं, so Azure will be responsible. अगर हम AWS से ले रहे हैं, तो AWS will be responsible. So they will give us the infrastructure in the infrastructure as a service. On top of it, हमें infrastructure मिल गया. Now we as a company will have to install the OS. Operating system हम install करेंगे, whether it is Linux, whether it is Windows. अगेन कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अगर लिनक्स के सर्वर्स चाहिए, सो दे विल इंस्टॉल द लिनक्स. इफ दे नीड द विंडोज, सो दे विल इंस्टॉल द विंडोज. जो भी मिडलवेयर, रन टाइम, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए इन ऑर्डर टू ऑपरेट द डेटा, वो हम ही लोग मैनेज करेंगे एज ए कंपनी. और उसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन चलेगी, मतलब उस सर्वर पे जो भी सर्विस चलेगी. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू रन एनी एप्लीकेशन ऑन द सर्वर, सो यू विल हैव टू इंस्टॉल इट एज ए कंपनी. मतलब आपकी कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. उस पे जो भी मेंटेनेंस करना होगा फ्रॉम द ओएस टू द एप्लीकेशन, योर कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. मतलब ओएस में अगर कोई इशू आता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. यू हैव टू फिक्स इट. ओएस की पैचिंग करना आपका काम है, ओएस के बग फिक्सेस करना आपका काम है. उसके ऊपर जो भी आप सर्विस रन कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, इट इज योर responsibility to take care of it. कोई इशू आता है, you are responsible for it. So cloud service provider will not handle these stuffs because you are using only infrastructure as a service. So you just have to pay for the infrastructure as a rent, but बाकी की सर्विसेज के लिए आपको कुछ नहीं पे करना है, and you will be responsible for it. So ओएस को मैं और बाद में डिस्कस करूंगा. देयर आर सम लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट इन द ओएस. जो भी आप ओएस चलाओगे, देयर आर सम लाइसेंसेस कैटेगरीज दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशंस. तो ऐसा नहीं है कि ओएस के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है. वट एवर ओएस यू आर यूजिंग, देयर आर लाइसेंस एसोसिएटेड, तो लाइसेंस के ऊपर अलग से कॉस्ट होती है. बट येस, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, you are not responsible for the maintenance of the underlying infrastructure. You will just maintain the OS up to application level architecture. So इस डायग्राम में जहाँ पे ये highlighted है with the purple color, so that is something which is managed by the cloud service provider. अब मान लो आपने एक सर्वर लिया
and on top of that server you are running the Active Directory services. So if it is infrastructure as a service, so Active Directory will be your responsibility. उस एक्टिव डायरेक्टरी को आपने विंडोज सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर रखा है, सो विंडोज सर्वर इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द अंडरलाइंग सर्वर इन द बैक एंड, जो भी बैकएंड में जो हार्डवेयर चल रहा है, जो सर्वर चल रहा है, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज. सो उसमें जो कुछ भी करना होगा, कुछ भी आता है उसके ऊपर टास्क, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी विच इज PaaS. तो यू कैन कॉल इट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. सो अगर आपको एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म चाहिए क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर से, सो यू कैन ऑल्सो अप्रोच फॉर दैट. आप पूरा एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट दैट आई नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, मुझे पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, प्लस साथ में मुझे ओएस, मिडलवेयर और रन टाइम, मतलब मुझे एक पूरा प्लेटफॉर्म चाहिए. आई डोंट वांट टू मैनेज दिस प्लेटफॉर्म. मुझे एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म चाहिए वेयर आई विल डायरेक्टली keep my data and I will directly run my application or service, and I will only be responsible for my data and my applications only. So that is called platform as a service. So platform as a service में पूरा infrastructure plus पूरा जो middleware and runtime का platform है, that will be operated by the cloud services provider. उसको manage करना, उसको upgrade करना, bug fixes, that is their responsibility. You are just responsible for your service जो आप उसके ऊपर चला रहे हो and the data. Let me give you one normal example to make it understand. So see, I will just give you one very simple example जो आप समझ सको. See, what happens, for example, suppose you need one SQL. आपको एक SQL चाहिए, structure query language database. So you need one of the SQL language platform. आपको कंपनी में रिक्वायरमेंट है एक SQL सर्वर की, और you can pronounce this as SQL as well. Both are okay. So आपको इसकी रिक्वायरमेंट है. Now what you do if you are under the infrastructure as a service, अगर आप infrastructure as a service में SQL यूज करना चाहते हो, so what you will do, so generally you will create one of the server, one of the virtual machine. आप एक VM बनाओगे, then you will install the operating system on top of it, then you have to install the SQL. फिर आप SQL का जो इंजन होता है, that application you have to install. Then on top of that you can keep your data, you can run the queries. इतना काम आप करोगे. So if it is infrastructure as a service, so until the up to the VM का जो भी बैकएंड है, लाइक VM किसी सर्वर पे बना होगा, किसी फिजिकल सर्वर में, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट से लिया है, सो Azure विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. उसकी जो भी नेटवर्किंग है उस हार्डवेयर की, Azure विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. उसमें जो भी मेंटेनेंस अपग्रेडेशन है, Azure विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आपका काम है OS इंस्टॉल करना, SQL इंस्टॉल करना, डेटा एंड क्वेरीज वगैरह मैनेज करना. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. Now, if you don't want to manage these stuffs as well, then there is one option, platform as a service. So platform as a service में क्या होगा? Again, the same setup. There is a VM which is running on one of the physical server. There is a OS, there is SQL, and there is another stuffs like data. There are queries, configurations, etc. PaaS में क्या होता है? In the PaaS, you get this ready-made platform directly from the cloud services provider. मतलब आपको OS भी इंस्टॉल नहीं करना है, OS भी मैनेज नहीं करना है, and the underlying application, जो एप्लीकेशन या जो सर्विस आप चलाने जा रहे हो, विच इज कॉल्ड मिडलवेयर एप्लीकेशन, दैट ऑल्सो यू विल नॉट मैनेज. यू विल गेट ए रेडीमेड प्लेटफॉर्म. आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. यू विल गेट ए रेडीमेड SQL. यहाँ पे आप SQL इंस्टॉल कर रहे थे, यहाँ पे आपको SQL रेडीमेड एक कंसोल पूरा प्लेटफॉर्म बना बनाया मिलेगा. यू जस्ट हैव टू इंजेस्ट योर डेटा एंड रन द क्वेरीज. आपको जो भी डेटा मैनेज करना है, जस्ट मैनेज इट डायरेक्टली. सो इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू विल बी गेटिंग ए रेडीमेड प्लेटफॉर्म. सो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, यू विल बी गेटिंग इट एंड यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. जो भी प्राइस आता है वो आप पे करोगे. सो दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग. सो फॉर एग्जांपल, यू हैव टू क्रिएट ए डोमेन कंट्रोलर. आपको एक डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना है. डोमेन कंट्रोलर विल बी क्रिएटेड आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ ADDS. एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के बाद डोमेन कंट्रोलर क्रिएट होगा. सो इफ यू गो विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सो हाउ डज इट ऑपरेट? अगेन यू नीड ए सर्वर. आपको एक VM चाहिए. VM कौन देगा आपको?
द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जाम्पल AWS और Azure। उसका पूरा मेंटेनेंस वही कर रहे हैं बिकॉज दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। OS यू विल इंस्टॉल, ADDS के लिए आप विंडोज सर्वर इंस्टॉल करोगे। आफ्टर दैट यू हैव टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस विच इज कॉल्ड ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। उसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, यूजर्स, ग्रुप, देयर परमिशंस, यू विल मैनेज। सो माइक्रोसॉफ्ट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अंडरलाइंग सर्वर। जो भी सर्वर उन्होंने आपको दिया है, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सो यू आर पेइंग द रेंट अप टू दिस लेवल। OS installation, OS maintenance, OS patching, everything is your task. Again, these all stuffs you have to install, you have to manage. That is infrastructure as a service. But if you go with the PaaS, so PaaS will provide you the ready-made platform for using the Active Directory. So in Azure, there is one ready-made platform which is called Microsoft Intra or Azure Active Directory. So आपको Active Directory के लिए कोई server वगैरह create नहीं करना है. You will be getting a ready-made platform where you can just go and you can just manage your objects and you have to pay accordingly. So maintenance का, platform installations का कोई भी task आपको नहीं करना है. You will be getting the ready-made platform. So that is PaaS service. So under the PaaS service, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों का PaaS ले सकते हो. There are some dedicated services under the cloud that is only available as a PaaS. तो सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी रिक्वायरमेंट रख दी कि मुझे IaaS नहीं चाहिए, मुझे PaaS में ही जाना है. So that's not something that you can do. PaaS में कुछ सर्विसेज है विच इज ऑफर्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, तो आप वही यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इन Azure, there is Azure Bastion service that we will discuss in future. So Azure Bastion is one of the PaaS service. Then Azure Active Directory, which is called Microsoft Intra, that is also one of the PaaS service. So storage accounts, these all are the example. So बहुत सारी PaaS services है that we will discuss in the future topics. So if the company have the requirement, they can go with IaaS, they can go with PaaS. And mostly company में PaaS use होता है for the web servers. So regarding the web server, there is a service in Azure which is called app services. उसमें आप डायरेक्टली अपना कोड रन कर सकते हो. यू कैन डू द कोड टेस्टिंग, यू कैन डिप्लॉय द कोड्स इन द प्रोडक्शन. सो मोस्टली उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है व्हेन इट कम्स टू द PaaS एंड Azure एक्टिव डायरेक्टरी को. So we will discuss these topics in the future. So under the PaaS, you are just responsible for managing the application and your data. Rest of the platform will be managed by the cloud services provider. Now comes the third category, which is called SaaS, software as a service. So software as a service basically means that you don't want to manage anything. You just need a ready-made console and you will just manage your data. You will just starting working on it. मतलब आपको ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, ना आपको वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म मैनेज करना है. इवन यू आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन. आपको कोई एप्लीकेशन भी मैनेज नहीं करना. इफ एनी इशू कम्स इन द एप्लीकेशन, द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर विल टेक केयर ऑफ इट. सो दैट इज SaaS सर्विस. एक एग्जांपल देता हूँ, Office 365. Most of you are already familiar with Office 365. So Office 365 is one of the software as a service. वो है SaaS का example. So in the Office 365 we get a portal. हमें एक पोर्टल मिल जाता है एंड वी जस्ट यूज इट. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एनी सर्वर फॉर द Office 365. We are not responsible for any kind of maintenance, nothing. We just get a console over the cloud. हमें user ID password मिला होता है. We are just using it, and if any issue comes on the platform level, then provider will take care of it. So Office 365 is the product of Microsoft, so they will take care of it. So even a lot of portals are there, just like the ticketing portals used in the company. That is also one of the example of SaaS service. Ticketing portals, आपको रेडीमेड यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है. यू जस्ट लॉग इन विद दैट एंड यू आर एबल टू यूज इट. तो उसके लिए हम कोई अलग से सर्वर सेटअप नहीं करते. There are a lot of ticketing portals which is available as a software as service. So we just log in there, just like Zendesk आता है, उसमें user ID password से log in किया and we are able to integrate it. हम उसको integrate कर लेते हैं अपनी company infrastructure के साथ and we are able to use it. So that is one of the SaaS. That is the example. So बहुत सारे portals, बहुत सारे web applications which is used in the company, they are the example of SaaS. Office 365 is one of the example. Ticketing portals, बहुत सारी companies में
gateway portals होते हैं, the attendance portals are there, so they all are the example of SaaS. So as a cloud admin, when it comes to the cloud administrator, जो लोग cloud पे काम करते हैं, so they generally support the infrastructure as a service and platform as a service. Cloud admin इन दो segments को support करता है. SaaS के लिए अलग से वेंडर टीम होती है. जस्ट लाइक इफ वी आर यूजिंग ऑफिस 365, सो उसके लिए एक अलग से टीम होगी. बट द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आईएस एंड पैस मैनेजमेंट. तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट करता है. So in future we will also discuss about the job responsibility of the cloud admin. For now, let's focus on this task. So according to the service delivery model, these three are the category: IaaS, PaaS, and SaaS. So you should be aware about these services. Although no one is going to ask you this in interview, but वो examples पूछ सकते हैं interviews में, like what are the PaaS example, what are the IaaS example. So time to time we will discuss about this also, but no one is going to focus on this theory. But before starting the cloud, you should know about it because you must be great in the fundamentals. Now, let's talk about the second category, which is deployment model. So as per the deployment model, we have mainly three category: public, private, and hybrid. But there is one more cloud which is called community cloud. So community cloud करके भी होता है, but generally these three are the main categories: public, private, and hybrid. So हम चारों को ही discuss करेंगे. So these are some of the cloud services providers in the market that you can see here. Now let's talk about the public cloud. Public cloud क्या होता है, पहले उसको discuss करते हैं. So public cloud basically means you are using the data center of some different organization. आपने किसी दूसरे डेटा सेंटर को, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सेंटर को आप लोग यूज कर रहे हो, एंड यू आर पेइंग देम फॉर द सर्विसेज. दैट इज अ पब्लिक क्लाउड. सो देयर विल बी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर अंडर द पब्लिक क्लाउड. जो लोग आपको पब्लिक क्लाउड की फैसिलिटी देते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, एंड यू आर एबल टू यूज देयर शेयर्ड प्लेटफॉर्म थ्रू द इंटरनेट. सो यू नीड द सब्सक्रिप्शन, यू नीड द अकाउंट. आपको वहां से सब्सक्रिप्शन या अकाउंट लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज देयर सर्विसेज. देन यू विल बी एबल टू यूज द पब्लिक क्लाउड. सो जितने भी हम क्लाउड्स सुनते हैं मार्केट में, AWS, Azure, then Google Cloud, Alibaba, so these all are the public cloud actually. और इवन जो कंपनी में जो क्लाउड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट इज अ पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड ज्यादा यूज होता है आज की डेट में बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. सो पब्लिक क्लाउड ही पढ़ने वाले हैं हम लोग. वी विल बी फोकसिंग ऑन टू क्लाउड्स, AWS एंड Azure. पब्लिक क्लाउड वर्क्स ऑन पे एज यू गो मॉडल. जैसे कि मैंने बताया आपको, वॉट एवर सर्विसेज यू आर यूजिंग, you have to pay for it. There will be monthly bills. So the bills have to be paid by the company to the cloud services provider. So it will be managed by the cloud services provider. इससे आपने cloud service ली है, वही इसको manage करेगा. For example, AWS से ली है, so Amazon will be responsible. Microsoft से ली है, so Azure will be responsible. So AWS, Azure, GCP, then your Alibaba cloud. So these all are the examples of your public cloud facility. Now, public cloud is the cloud which is preferred by the organization. So why? So there are benefits. So in my last video also we had discussed about the benefits of adopting the cloud. हमने cloud को adopt करने के कुछ benefits देखे थे. So you can just go through with that video. These all the benefits that we discussed in our last session, that is actually the benefit of adopting the public cloud. ये सारे benefits public cloud adopt करने के हैं. So अगर आप public cloud में जा रहे हो, so you will get all these benefits which was not there in the on premises. So कुछ मतलब कुछ bullet benefits ले लेते हैं यहाँ पे. So if you go with the public cloud, it is low cost in terms of operation. मतलब यहाँ पे कोई capex का initially कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, and you can manage it with the less cost. You have to pay for the services that you are using only. So per minute basis पे और कुछ services per hourly basis पे आपको उनके bills pay करने पड़ते हैं, and that is very very less in terms of cost as compared to the on premises. So initial कोई capital नहीं है, कभी भी आप इसको हटा सकते हो accordingly. Location independent है public cloud. Whatever is your user base, you can just set up your data center over there without having a physical office.
फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल ऑफिस लगाए बिना आप किसी भी लोकेशन पे अपनी सर्विसेज या अपने सर्वर्स को या अपने जो भी आपके रिसोर्सेज है, यू कैन जस्ट सेट इट अप वर्चुअली, so you can just avail the services. आपके जिस लोकेशन में आपको रिक्वायरमेंट है, इट इज लोकेशन इंडिपेंडेंट. सो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैव द डेटा सेंटर इन मल्टीपल लोकेशंस. इट सेव्स द टाइम. पब्लिक क्लाउड में आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी भी टाइप के हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए, डेटा सेंटर मेंटेनेंस के लिए. So it will save a lot of time. You can just focus on deploying the new products directly. आपको जो भी डिप्लॉयमेंट करनी है सीधा डिप्लॉयमेंट करो. हार्डवेयर कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन उसकी टेंशन ही नहीं है. सीधा अपडेट रिलीज करनी है करो. सर्वर असेंबल्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू फोकस ऑन द मेन टास्क. जैसे मान लो मेरे को एक रिक्वायरमेंट है, आई हैव टू सेटअप द डीएचसीपी. तो डीएचसीपी सेटअप करने से पहले आई विल हैव टू फर्स्ट सेटअप द फिजिकल सर्वर, फिर उस पे ओएस इंस्टॉल करो, फिर उसकी कनेक्टिविटी करो, कॉन्फ़िगरेशन करो, बेस सिक्योरिटी लगाओ, देन आई वुड बी एबल टू इंस्टॉल द डीएचसीपी. सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इन द ऑन प्रेम. बट इन द क्लाउड आपने सीधा वहां से you will just take the VM. आपने सीधा VM ली, वर्चुअल मशीन ली क्लाउड के ऊपर, and you will just install the OS. If it is IaaS service, then सीधा DSCP installation. It saves a lot of time. It is very quick and easy to set up. क्लाउड को सेटअप करना बहुत easy है. You just need the account from the cloud services provider, और जो भी सर्विस आपको यूज करनी है, just start using it. So there is no physical setup required, there is no office location required, there is no compliance related to the physical premises that you have to follow, and it offers the business agility as well. आज मेरा business अच्छा है, I am using the IT infrastructure as well. Tomorrow if I want to shut down the company, let's say the company has become bankrupted, I want to shut down the complete business, so I don't have to worry about the things. I don't have to worry about selling the IT infrastructure. I can just go and decommission the cloud infrastructure. सीधा cloud के infrastructure को decommission करो, काम खत्म. आज मेरा office, let's suppose if it is in India, tomorrow if I want to expand it to the US, so I don't have to worry about the physical infrastructure which is in India to be sent to the US. सीधा I will just decommission, I will just migrate my infrastructure from India to US data center directly as it is. India का data center लेके virtually I will migrate it to the US data center in the cloud. So it offers the business agility. As per the business, I can expand, I can decrease my requirements. जो मेरी requirement है मैं उसके हिसाब से I am flexible if I am on the public cloud. And it offers the scalability and reliability as I mentioned in my last session as well. Scalability offer करता है public cloud. आपको अगर एकदम से मल्टीपल सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, सो इट इज पॉसिबल इन द क्लाउड टू एक्सपेंड. ऑन प्रीमाइसिस में ये पॉसिबल नहीं है, बट इन द क्लाउड इट इज पॉसिबल इवन ऑन द स्पॉट. इवन यू कैन सेट अप द ऑटोमेशन रूल्स एज वेल, जिसमें एज पर द रिक्वायरमेंट जैसे ही लोड आएगा सर्वर्स के पूल के ऊपर, सो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सर्वर्स विल बी क्रिएटेड, एंड जैसे ही लोड कम होगा द नंबर ऑफ सर्वर्स आर गोइंग टू गेट डिक्रीज. सो दीज प्रैक्टिकल्स वी विल इम्प्लीमेंट in the future topics. So these are the benefits of adopting the public cloud. इसलिए public cloud को ज़्यादा preference दी जाती है. Now the second category of cloud is private cloud. दूसरा type है private cloud. और private cloud कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. It's not a different kind of topic. Public cloud ही famous है. जितने भी क्लाउड के कोर्सेज होते हैं दैट इज एक्चुअली ऑन द पब्लिक क्लाउड, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत है. प्राइवेट क्लाउड क्या होता है बेसिकली? सो यू मे हैव हर्ड अबाउट वर्चुअलाइजेशन. आप लोगों ने वर्चुअलाइजेशन सुना होगा कि फिजिकल सर्वर्स के ऊपर कुछ वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स इनेबल किए जाते हैं यूजिंग EXSI ऑफ VMware, Hyper-V ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. फिर उसके ऊपर मल्टीपल OS इंस्टॉल कर सकते हैं. दैट इज अ वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म. सो क्लाउड के मॉडल के आने से पहले एक्चुअली देयर वाज वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इन द ऑन प्रीमाइसेस. मतलब एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल ओएस को इंस्टॉल किया जाता था. दैट इज वन ऑफ द वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म. वो होता था ऑन प्रीमाइसेस ही. उसको सब लोग ऑन प्रीमाइसेस में ही डेटा सेंटर लगाते थे, पूरा सर्वर ऑन प्रेम में होता था और उसको सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेज करते थे. So that is actually known as private cloud. उसी को private cloud बोलते हैं. So in the private cloud, there will be one of the on-premises physical data center where on the single hardware multiple OS will be running थ्रू द वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म लाइक VMware का EXSI होगा या Hyper-V माइक्रोसॉफ्ट का. उसके ऊपर मल्टीपल OS चल रहे होंगे और कंपनी आपकी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो कंप्लीट ऑन प्रीमाइसिस
using the virtualization. So examples are EXSI, Oracle, IBM. So these kind of company offers the private cloud facility. तो जिन companies को public cloud में नहीं जाना है, they can go with the private cloud. मतलब on premises अपना infrastructure वो लगाती है. जैसे कि governments. So government generally don't trust the public cloud because that is again one of the third organization to involve with. So वहाँ पे they prefer the on premises private cloud kind of setup. So on premises में जहाँ पे virtualization काम कर रहा है, that is generally we call it private cloud. सो सब कुछ वही है, ऑन प्रेमाइसिस वाली लिमिटेशन सब कुछ वहीं पे आ जाती है. अगर एक सर्वर पे आपने 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर रखे हैं और उन चारों में फॉर एग्जांपल देर आर सिंगल सर्विसेज, एक में डीएचसीपी चल रहा है, एक में एडी चल रहा है, एक में डीएनएस चल रहा है एंड वन सर्वर इज हैविंग द आईआईएस. अगर वो कंप्लीट हार्डवेयर डाउन हो गया तो चारों सर्विसेज चारों सर्वर को इकट्ठा ले डूबेगा. तो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. और जितने भी मैंने ऑन प्रेमाइसिस के डिसएडवांटेजेस बताए थे, सो these all will be related to the private cloud itself. So private cloud is also there in some companies. On premises आज भी है कुछ companies में, but ratio have become less. Ratio कम हो गया है because companies are more and more moving to the public cloud infrastructure because of the agility, because of the cost, because of the maintenance. So बहुत सारे benefits. Now let's talk about the third category of cloud, which is called hybrid. अब hybrid cloud is also one of the third model as per the delivery, as per the service, as per the deployment. So hybrid cloud क्या होता है basically? So if you go to the real production scenarios, अगर आप real companies में जाओगे, they are not totally dependent. Like companies cannot have the complete infrastructure on the public cloud. Companies cannot have the complete infrastructure nowadays on the on premises also. Company क्या करती है? They use the mix kind of environment. Like there are some compliance requirement, there are some legal requirement also, जहाँ पे आप completely cloud पे नहीं जा सकते. कुछ ऐसे standards होते हैं जो follow करने पड़ते हैं, especially if you are in the medical industry. So medical industries में you cannot keep the patient data on the cloud. That is one of the compliance. So in such scenarios, the data has to be in the on premises. या फिर गवर्नमेंट में भी अगर आप बात करो, the data has to be on premises. So they can, as per the legal compliance, they cannot move completely to the public cloud. वो नहीं जा सकते. So, but they want to use that infrastructure also. मतलब वो मिक्सअप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं कि डेटा तो चलो मैं ऑन प्रीमाइसिस रख लूंगा, कुछ ऐसे सर्वर्स जहाँ पे क्लाउड पे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आई विल कीप इट ऑन प्रीमाइसिस, बट जस्ट टू सेव द कॉस्ट आई विल मैक्सिमम माइग्रेट माय इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पब्लिक क्लाउड. सो ऐसे सिनेरियोज आपको कंपनी में मिलेंगे जहाँ पे फॉर एग्जांपल 60% पब्लिक क्लाउड यूज हो रहा है, 40% ऑन प्रीमाइसिस भी है, या फिर 80% पब्लिक क्लाउड है, 20% ऑन प्रीमाइसिस भी है. डिपेंड्स अपॉन देयर रिक्वायरमेंट कि मैं डेटा क्लाउड पे ले जा सकता हूँ नहीं ले जा सकता, या फिर मेरी जो सर्विस है वो क्लाउड पे सपोर्ट करेगी नहीं करेगी. इफ इट इज अ लेगेसी वन, बहुत पुरानी कोई एप्लीकेशन है, इफ इट डज नॉट सपोर्ट ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म, सो आई हैव टू कीप इट इन द ऑन प्रीमाइसिस. सो कंपनीज have the mixed kind of culture. That is called hybrid cloud. So in the hybrid cloud, what happens? You are using the combination of infrastructure. Some infrastructure is hosted in the on-premises and some are hosted on the cloud. और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड क्लाउड बोल रहे हैं. इवन कुछ कुछ कंपनी में in the cloud also they are using multiple cloud, like they are using Azure also. Along with that they are using AWS. कुछ services AWS में है, कुछ Azure में है. So for fault tolerance, for reliability, for redundancy, they are using multi-cloud as well along with the on-premises. So if the company is using multiple cloud, that is called multi-tenancy model. उसको कहते हैं multi-tenancy model. और जब कंपनी में multiple infrastructure use हो रहा है, cloud भी है, on-premises भी है, that is called hybrid cloud. And टू बी वेरी फ्रैंक, वट एवर कंपनी यू गो, आप किसी भी कंपनी में जाओ, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है. दैट इज वाई वी स्टिल हैव द टीम ऑफ द ऑन प्रीमाइसिस. तभी आज भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स है कंपनी में. देयर रेशियो हैव बिकम वेरी लेस. उनकी जो काउंट्स है पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द पब्लिक क्लाउड, क्योंकि क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर अब सब कुछ हैंडल कर रहा है इन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. बट यस, on premises is still there, but the infrastructure count has become less. So if you will go to the big companies, big MNCs, you will see the hybrid infrastructure. वहाँ पे hybrid infrastructure ही मिलेगा. As a cloud admin, you will be responsible for the management of cloud only,
and for the on-premises, there will be on-prem team as well. So yes, you guys will be mostly getting the job in the hybrid cloud infrastructure where you will solely working on the cloud. So that's a different story altogether. Now, now let's talk about the fourth type of cloud, which is called community cloud. So community cloud में क्या होता है? Suppose there are three companies. एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं. There are three banks. So ABC Bank, XYZ Bank, and TMC, any random bank. These three banks have decided that we will not go to the public cloud. हम public cloud में भी नहीं जाएंगे एंड हम अलग से अपना डेटा सेंटर भी नहीं लगाएंगे. मतलब एबीसी अपना अलग डेटा सेंटर नहीं लगाएगा, ये भी नहीं लगाएगा, ये भी नहीं लगाएगा, बिकॉज देयर इज ए ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज मेंटेनेंस, बहुत सारा खर्चा है. सो व्हाट दे डिसाइडेड, इन तीनों कंपनी ने मिलकर डिसाइड किया दैट वी विल यूज ए शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. हम तीनों मिलके अपना एक खुद का डेटा सेंटर लगाएंगे विच इज अगेन अवर फिजिकल डेटा सेंटर. एबीसी कंपनी भी उसको यूज करेगी, XYZ भी यूज करेगी और टीएमसी भी उसको यूज करेगी. सो वी विल शेयर इट. इसका पूरा डेटा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग वी विल शेयर टुगेदर एंड वी टुगेदर विल टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस, अपग्रेड, सिक्योरिटी, पैचिंग, हॉट फिक्सेस, सब कुछ हम तीनों मिलके करेंगे. एंड दिस डेटा सेंटर इज ओनली फॉर us. It is only for these three companies. No other companies will have access to it. This is called community cloud. So cost को सेव करने के लिए ना तो इनको पब्लिक क्लाउड में जाना है, ना तो इनको कंप्लीट ऑन प्रीमाइसेस रहना है. They just want to save the cost. They just want to get rid of the maintenance task and everything. So they will set up a on-prem location, but it will be shared by multiple company. है वो on-prem, but वो multiple companies मिलके share कर रही है. That is community cloud. अदरवाइज एक ऑन प्रेम लोकेशन एक ही कंपनी को डेडिकेटेड होता है, बट यहाँ पे एक ऑन प्रेम डेटा सेंटर बना के तीन कंपनीज उसको यूज कर रही है एंड दे आर एबल टू सेव द टाइम, मनी एंड एफर्ट. दैट इज कम्युनिटी क्लाउड. तो इस टाइप के भी कहीं ना कहीं कुछ इन्वायरमेंट्स देखने को मिलते हैं वेयर द सेम डेटा सेंटर इज शेयर्ड बाय मल्टीपल कंपनीज. So this also happens, but it's very like less. It's very once in a while situation. So public cloud आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. On premises is also there, so you will also see the on premises infrastructure. So all in all, you will see the hybrid infrastructure. आपको hybrid infrastructure देखने को मिलेगा. So these are the categories and the types of cloud. So कोई आपसे पूछता है what are the types of cloud? So types of cloud वही है IaaS, PaaS, SaaS, public, private, hybrid and community. But these comes under the category. पहले तीन टाइप सर्विस डिलीवरी मॉडल कैटेगरी में आते हैं एंड सेकंड टाइप जो है डिप्लॉयमेंट मॉडल कैटेगरी में आता है. सो यू विल डिस्क्राइब इन डिटेल इफ समवन इज आस्किंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर. सो as you will tell them that as per the model we have two model. First one is service delivery model, second one is deployment model. So as per the service delivery model we have three types, IaaS, PaaS and SaaS, and as per the deployment model again we have further three types, public, private, hybrid, and we have one more which is community. Then you can explain in detail regarding this. So now we are also done with the types of cloud. So from the next session onwards, we will be jumping to the Azure and we will be focusing on the Azure topic itself. So gradually we will move to the AWS series as well, then Terraform, then DevOps and everything. So hope you enjoyed the session. So thank you very much for your timing. See you in the next session. Bye.